Hello everyone. How are you all? Good afternoon. So I hope you are all well. So in today class we discuss a new topic related to political science, class 8. So basically first of all you have to observe these pictures and tell me what comes in your mind. Yes, student. Yes, student. First, all these pictures depict condition of the girl in our society. Okay, like first picture depict like कि जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनकी जो बेसिक एमिनिटीज है वो भी अभी फुलफिल नहीं है, और पर यही जो दूसरी जगह बच्चे हैं जो वो जा रहे हैं हमारे स्कूल्स में. ओके, एंड देन दिस पिक्चर्स आल्सो डिपिक्ट पुअर फैसिलिटी हैव इनके पास जो है these girls have poor facility, but अगर हम बात करें इस लड़की की, this girl she's a doctor. तो बेसिकली ये जो इनइक्वालिटीज हैं, फिर कह सकते हैं कि या फिर ये डिफरेंसेस क्यों हैं आखिरकार. तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यस वेरी गुड स्टूडेंट, गुड ऑब्जर्वेशन. सो ये पिक्चर्स जो डिपिक्ट हमें कर रही हैं एक जिनकी जो बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है, फिर कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि किसी के पास जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पर किसी के पास जो है वो फुलफिल है, जो कह सकते हैं कि जो सरप्लस रिसोर्सेज है उनके पास. तो ऑल दीज फैक्टर्स तो this type of condition in our society faced. So तो सर, तो क्या कारण है बिकॉज ऑफ आपको क्या लगता है बेसिकली जो इसके पीछे क्या कारण होते होंगे. तो सो वी डिस्कस इन डिटेल इन अपकमिंग मॉड्यूल. सो गुड ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल this two pictures, and what your assumption about this school. Yes, student. First pictures depict this is a very well settled infrastructures college, and then second one lack of facilities, and we can say that कि जो इसकी जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो बिल्डिंग्स है काफी जो पुरानी हो चुकी है या फिर जो वो हो चुकी है ना. तो दिस टाइप ऑफ these differences. Okay students, so first of all so in first module we discuss about changes in education system. Changes in the education system. So we discuss girls began to going to the school. तो क्या चेंजेस आए, क्या ऐसे बदलाव आए कि जो कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी स्कूल जाने लगी. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली व्हाट विल चेंजेस ओवर देयर. तो अगर हम बात करें मेनी ऑफ रिफॉर्मर्स फेल्ट द that education for girls was necessary in order to improve their condition of women. कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम एजुकेशन कैसे हम देखते आ रहे हैं कि कैसी ऐसी प्रथाएं थी या फिर कह सकते हैं जो कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ द गर्ल इन आवर सोसाइटी, वो काफी कह सकते हैं कि वो थी लो थी, और फिर जो लोगों का जो माइंडसेट था वो भी काफी जो कह सकते हैं कि बैड था. तो ऑल दीज रिफॉर्मर्स आए. फिर जो रिफॉर्मर्स उन्होंने जो एक बदलाव किया अपने समाज के लिए, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस दे अवेयर द पीपल, एंड देन तो फिर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो सबसे जो एक अच्छा स्टेप होगा हमारे लिए जो सोसाइटी के लिए वो होगा कि हम क्यों ना लड़कियों को पढ़ाएं, है ना. many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve their condition of women. क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी जो कंडीशन है सोसाइटी में वो बहुत ही खराब है, बैड है. तो बेसिकली जो अगर हम इनको अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इनको जो बराबर में लेना चाहते हैं तो इनको सबसे पहले एजुकेट करना होगा, इन्हें पढ़ाना होगा. Okay student, so now these steps taken by all these reformers Ishwachandra Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy. So all these okay student. So we can say also that Vidyasagar in Calcutta
and many others reformers in Bombay set up a school for girls. और उन्होंने जो किया क्या, जहां जहां रिफॉर्मर्स थे उनको ऐसा लगा कि हमें यहाँ जो एक संस्था या फिर किसी कोचिंग सेंटर में खोलना चाहिए फॉर एजुकेटिंग लाइक गर्ल्स वुमेन्स। ओके, तो दैट्स तो उन्होंने खोला वहाँ, ठीक है, वहाँ उन्होंने एजुकेट करना शुरू किया। एंड देन व्हेन द लाइक फर्स्ट स्कूल्स वेयर ओपनड इन द लाइक मिड 19th सेंचुरी, तो जो मिड में मतलब 19th सेंचुरी के बीच में उन्होंने पहला जो गर्ल्स के लिए उन्होंने स्कूल खोला, ठीक है। तो ये आपको डेट याद रखना है। And then like many people we can say that like many people were like afraid of that day, तो बहुत लोग डरे हुए थे उससे, क्योंकि उनको लगा कि ये पढ़ लेंगी तो ये आगे बढ़ जाएंगी, या फिर उनको ऐसा लगता था कि ये सेफ नहीं है। बहुत का जो माइंडसेट था, लेकिन बिकॉज हम देखते आ रहे हैं कि जो सोसाइटी का माइंडसेट है वो नैरो माइंडसेट था, वो उस हिसाब से सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे हमें एक सोसाइटी को डेवलप करना है, कैसे उनको आगे लेकर चलना है भविष्य में। तो ये सब चीज जो, एंड दे फियर्ड दैट स्कूल्स वुड बी like girls away from home, and then like वो डर रहे थे कि मतलब जो schools like would take girls away from, कि उनको घर से कैसे ले जाएंगे अपने स्कूल तक, prevent them from doing their domestic duties, और उनको मतलब जैसे कि उनको कैसे रोका जाए ताकि मतलब वो डोमेस्टिक इतना जो दबाव होता था कामों का उनको कैसे कम किया जाए। एंड then like most of like educated women were taught at home by like liberal father or husbands, like sometimes women taught themselves। और जो कुछ समय तो जो वुमेन्स है वो लाइक अगर हम कह सकते हैं कि वो खुद को जो है वो करती थी, या फिर वो खुद को मतलब उन्हें पढ़ाना चाहती थी, या वो लोग क्या करते थे उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। तो लाइक ऑल दीज लाइक अंडरटेकन रूल्स बाय दीज रिफॉर्मर्स, ओके, फॉर चेंज आवर सोसाइटी, जो हमारे चेंज करने के लिए जो एक अलग माइंडसेट बनाने के लोगों का। ओके स्टूडेंट, so this thing clear now? Very good. So now like we can say that जो open school like schools were opened, तो कौन कौन से like ऐसे हुए जो हम उसके बारे में जिक्र कर लें। तो फर्स्ट वन लाइक स्कूल फॉर गर्ल्स वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब। ओके, जो पंजाब में खोला गया। एंड देन लाइक ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र, और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्कूल्स के लिए गर्ल्स के लिए स्कूल खोला उन्होंने। एंड देन लाइक इन लाइक historic Muslim like household in the North India, and then women learned to read the Quran and Arabic, and then as well as they were taught by women who came home to like teach, and some reformers such as like Mumtaz Ali. Okay, so this is one reformers. Mumtaz Ali like reinterpret like verses from the like Quran to argue for the women's education, as well as like they amongst other things, these were meant to the encourage women to read about religion and as well domestic management in a language they could understand. Okay students, so like all these school were like opened for like girls education, they like all reformers like started like new society for like girls, like for equality of our society in Indian society. So like all these like step is a good step taken by our reformers like Dayanand Saraswati, like Jyotirao Phule, and there's like all these reformers like we can say that Raja Ram Mohan Rai. So all these, okay students, so this thing clear now, because they think that if girls educate then ऑटोमेटिकली जो उसका जितने भी कह सकते हैं कि जो समस्याएं हैं, फिर लाइक जितने भी जो मुसीबत है जो उन्हें मतलब उन्हें सहना पड़ रहा है, तो ये सब कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ दे आर एजुकेटेड। जो पढ़ लिख लेंगे तो वो जो अपना भविष्य में अपना जो स्कोप है लाइक हम कह सकते हैं कि उनको एक अच्छा मौका मिलेगा कि अपना भविष्य को सुधार सके, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। तो लाइक ऑल दिस, ओके स्टूडेंट्स, सो मूव टू नेक्स्ट। सो नाउ like this is question for you, like elaborate. Suppose you are a reformer, okay, so and how will you you can say that how will you convince people to like send their girls to regular school? जैसे हमने देखा कि रिफॉर्मर्स ने ऐसा तो उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट जो लोग जो था मतलब लोगों का जो बिलीफ जो था मतलब उनका जो मानना था, ठीक है, वो अभी भी जो उसके प्रति काफी
वो नहीं हुआ था, लाइक वो जागरूक नहीं हो पाए थे। उनका जो उनको ऐसा लगता है कि जो लड़कियां स्कूल जाएंगी तो वो परेशानी का वो हो सकता है। तो लाइक दीज टाइप्स ऑफ ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जैसे कि we can say that like both comes first to your mind when like you think that girls education, तो आपके पास सोचते हो कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में क्या, तो देयर मे बी लाइक a good chance that you are remember a particular girl you met you who could not go to primary schools, वो जाती भी नहीं है, उनके बारे में आपने सुना हो, or like perhaps you will, like both pictures are correct, like until recently many girls did not even like complete the primary school, अभी भी जो ऐसा नहीं होता है, but like dramatic progress has been like achieved towards gender equality in like basis education as a part of the like minimum development of the goals. And while more remains to be done, today challenges for improving girls education skill and job like prospectors have changed. And then more like a 5 step, like we can say that like we take 5 steps to improve girls education. Okay, prospectors like first like give girls strong foundation, उनको ऐसे बताया जाए कि आपको गर्ल्स का फाउंडेशन एक तैयार होगा थ्रू अर्ली चाइल्डहुड, and then develop like a disadvantage built like early in life and difficult to remedy, and but like effective ECD programs can avoid such disadvantage and then thereby yield high payoffs. Okay, and then like a new study suggests that in a मतलब उनको एक नया स्टडी के लिए सजेस्ट कर सकते हैं. And then like the second step we can say that focus on basis education gaps remains to be sure data from a like forthcoming papers suggest that. So ये सब हम सजेस्ट करते हैं उनको. तो और लाइक अगर थर्ड स्टेप लाइक इन हेल्पिंग गर्ल्स ग्रो इज टू लाइक प्रोवाइड देम विद जॉब रेलिवेंट स्किल्स दैट एम्प्लॉयज एक्चुअली डिमांड और दैट they can use in like launching their own business. इनके लिए उनको कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ये सब चीजों के लिए अवेयर कर सकते हैं ताकि वो उनको घर से बाहर भेजे. एंड लाइक relates to the like creation of the an environment that encourage investment in knowledge and like creativity. This requires innovation, specific skill and investment to help connect people with ideas as well as risk management tools that facilitate innovation. तो like ये सब चीजें जो उन्हें हम जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं. तो this thing clear now? Yes, very good student. Now we can move further. So like this is question for you. While establishing the schools for the education, what difficulties did the reformer had faced? Like orthodox mindset of the people, like father preferred to give education to their girls at a home, and operation and a boycott from the people. All of the above, both A and B. Yes, student. What do you think? Yes, very good. So all of these, because all ये सारी चीजें जो challenges है वो एज ए रिफॉर्मर उन्हें फेस करना पड़ रहा था, जो भी रिफॉर्मर्स थे लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाइक दयानंद सरस्वती, तो ऑल लाइक ऑल दे फेसेस लाइक दिस टाइप ऑफ लाइक माइंडसेट, लाइक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ द पीपल. दे आल्सो फेस लाइक फादर्स प्रेफर टू गिव, उन्हें उनके पिता को लगता है कि लड़की को घर पे पढ़ना चाहिए, एंड दे लाइक उन्हें लाइक वो बाइकआउट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे. तो लाइक ऑल दिस. ओके स्टूडेंट, सो आंसर इज डी. वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. So now student, till now we have like studied about reformers. अभी तक हमने reformers के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना. तो now like we say that who were male and made improvement in the society. Is there any contribution of female reformers? तो क्या आपको क्या लगता है कि फीमेल रिफॉर्मर्स के भी कंट्रीब्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल, यस. जो फीमेल रिफॉर्मर्स भी हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया, ऐसा नहीं सिर्फ मेल ने किया. जैसे कि हमने देखा कि ज्योतिराव फूले एज वेल एज, सो उन्होंने भी बेसिकली जो हमारे सोसाइटी के लिए काफी अच्छा किया, काफी अच्छा करना चाहा. तो सो वी कैन से दैट और लाइक सो both of like contribute equally in like improvement in the society for women. Okay student, so now students, this is like you have to like women supporting, and then like second like in first module you have to like observe these pictures and these pictures like you have to this woman, and then like we can discuss about that particular like this woman, like इन्होंने जो है उनमें काफी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या ऐसे वो भी थे, क्या कह सकते हैं कि जो रिफॉर्मर्स, जो कह सकते हैं कि जो
जो फीमेल रिफॉर्मर्स, ऐसा तो नहीं बिल्कुल मेल ही था, तो जी हाँ, तो जो फीमेल था, फीमेल भी था, और फीमेल भी उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, लाइक दिस दिस वुमेन, इसके बारे में पढ़ेंगे इन दिस फर्स्ट मॉड्यूल, लाइक इन 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 दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो लाइक मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम भोपाल, तो ये तो बेगम थे, तो भोपाल played a novel role in promoting education among the women. They founded primary school for girls at अलीगढ़, उन्होंने अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश के प्रांत में पड़ता है, उन्होंने ये बताया। एंड देन लाइक अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया, इनके बारे में बताया जा रहा है, जो बेगम रुकैया जी हैं, शखावत हुसैन स्टार्टेड लाइक स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड लाइक कलकत्ता, तो पटना और कलकत्ता में इन्होंने जो मुस्लिम गर्ल्स के लिए एजुकेशन स्टार्ट किया बेगम रुकैया ने। एंड लाइक सी वाज लाइक अ fearless like critics of the conservative and ideas, arguing that religious leaders of like every faith like accorded to like inferior place to women. And then as well as going to like universities, uh, starting of like 20th century, like some of the trained to be doctors, some became teachers, many women like began to write and publish their critical views on the place of women in society, like ताराबाई सिंधे भी उन्होंने भी उनके बारे में कहा। एंड द वुमेन लाइक एजुकेटेड एट लाइक होम एट पूना and publish a book like Stri Purushotulna. Okay, so this type of books like published by all types of like reformers, female reformers, Tarabai Shinde, and like Begum Rukaiya is also like a good reformers, and they like she think uh, girls also educated, girls have also right to education, girls also have right to speak. So all this type of like mindset, and then like for society change. Okay, so उसके लिए society change के लिए उन्होंने ये सब चीज किया। Okay, so like all this, so we can move further like more reformers, और उसके बारे में बताया जाए तो ह्यूमंस के लिए जो अगर हम बताएं तो like Pandita Ramabai, so like one of the like best, like the Pandita Ramabai, the great scholar of Sanskrit, and like felt the Hinduism was the observant towards the women, and then like wrote a book about the like miserable lives of like upper caste Hindu women. She like founded widow home at a like Pune to provide shelter to widows who had been like treated badly, क्योंकि हमने देखा कि जो विडो है अगर उसका पति की डेथ हो जाती है तो उसके साथ बहुत जो ट्रीट होता है वो काफी अनबिहेवियर लाइक अनवांटेड ट्रीट होता है, ना चाहते हुए उनको बुरा व्यवहार सहना पड़ता है। एंड देन लाइक विडो हु हैड बीन लाइक ट्रीटेड बैडली टू देयर हस्बैंड रिलेटिव्स, तो उनके जो हस्बैंड मर जाते हैं तो फिर उनके रिलेटिव्स ये तंग करने लग जाते हैं। एंड देन लाइक हेयर वुमेन वेयर लाइक ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ एज इकोनॉमिकली, पर उन्होंने ट्रेन थी तो वो कभी जो है वो खुद पे डिपेंड रहती, और वो अपने आप को जो समाज में साबित किया कि जो ऐसा नहीं होता, आपका जो माइंडसेट है वो गलत है, नैरो माइंडसेट से बहुत लोग चलते हैं, तो ये चीज हमें रिमूव करना चाहिए। तो लाइक एज अ पंडिता रामाबाई इज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, ओके, एंड शी प्रूव दैट। सो एंड देन लाइक वी कैन से दैट सोशल अवेयरनेस वाज स्प्रेड, उन्होंने जो सोशल अवेयरनेस स्प्रेड किया समाज में, जैसे बाय द एंड ऑफ द 19th century at the women like themselves were actively working for reform and they wrote books, edited magazines and founded schools, and like we can say that like training centers and set up women's association. So like all these centers started and set up for for women education, for develop in our society, uh, so that like all these steps taken by like the female reformer. Okay, student. And then next thing is like the formed political pressure group to push through laws for female and like better health care and like education for women. Some of them joined various kinds of like nationalist socialist movement from 1920s, and like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose was helped them. और उन्होंने जो बाकी जो हमारे लाइक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी ये चीज चाहा कि ये हमारे समाज में ऊपर उठ के आए, और उन्होंने उनका हेल्प भी किया, उनका सपोर्ट भी किया, उनकी सहायता भी की। ओके स्टूडेंट, so like this is all about like female reformer. So I think this thing clear now. Yes, very good students, very good. So we can move forward. Yes, so students like you have to answer this question.
all these women from various parts of India started reforms and challenged traditional norms, but who supported them? Like we can say that uh, supported the like दो जो कि जितने भी रिफॉर्मर्स थे या फिर कह सकते हैं कि लाइक जितने भी जो फ्रीडम फाइटर थे, लाइक दे सपोर्टेड दैम, उनको सपोर्ट किया गया है ना, ठीक है। जब उन्होंने अवेयर किया लोगों को, तो लाइक जो मतलब आम पब्लिक थी, जो आमजन थे, वो उन्होंने भी उन्हें सपोर्ट किया। उनको उनका भी जब उन्हें भी बात को पता चला यार, वो जब इस बात का उन्हें एहसास हुआ, फील हुआ कि नहीं, जो वुमेन एजुकेशन को भी हमें प्रमोट करना चाहिए, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। लाइक उनके फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, लाइक गवर्नमेंट भी उन्होंने देखा, और इसके बाद जो फ्रीडम फाइटर थे, तो लाइक ऑल दी सपोर्टेड ऑफ like various parts of like India started the like reformation changed. Okay, student. So now we have to like one question for you, like Stri Purusha was book written by which like Jyoti Rai Shinde. Okay, students, very good. This is answer Jyoti Rai Shinde. Like sorry to say, like we Tarabai Shinde. Okay, very good, students. Answer is Tarabai Shinde. Yes. So now we move to next. So now, student, what is this? Like the Hindu caste. What do you think? Like this type of like these pictures, what depict? Like you can say that like we can like these the caste systems. Like we can say that like at the top like Brahmins peoples to God, like, and then second like next like stood like Kshatriya in the warrior has, and then after that like Vaishya business class, and then like Shudra, the lowest class of farmers, and then like those who serve the other classes, and then below these two untouchable, also known as the Dalit. Okay, so like this is the like caste system in our society in earlier times. Okay, so in next module, like how caste system like eradicated from the Indian society. तो आपको क्या लगता है ये कैसे वो चीज कर रही है, कि मतलब कैसे प्रभावित कर रही है या फिर कैसे वो कर रही है? तो लाइक वी कैन से दैट लाइक कास्ट सिस्टम जो है वो सेपरेशन ला रहा है हमारे समाज में, या फिर कह सकते हैं कि जो एक अलगाव ला रहा है। अगर हम एकजुटता में रहते हैं, लाइक जैसे हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पढ़ा था, ओके बच्चों, जैसे हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पढ़ा था, तो उसमें जो है वो चीज किया, मतलब और हम डाइवर्सिटी का तभी कर सारे अलग अलग होते हुए भी, सारे अलग रिचुअल प्रैक्टिस करते हुए भी जो हम एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, कैसे उन्हें करते हैं। तो अगर हम बात करें इनका कि जो एराडिक्टेड, ये सारे जो कि ये हमें हमारी सोसाइटी को क्या करता है, ये पतन क्यों ले जाता है कि, और ये चीज और अभी तक जो है कुछ कुछ जो है अभी हटा है, पर जो लोगों का माइंडसेट अभी भी बदला नहीं है, बिकॉज ऑफ लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, ने प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई, सो लाइक इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी डिस्कस अबाउट रिलेटेड टू दिस pictures. So like social reform caste system, okay students, all over India. So first of all, like discuss like we Raja Ram Mohan Rai like criticized caste system inequalities, and then like other emerging castes such as like Pratna Samaj started a tradition of like bhaktis which believed the spiritual equality, as well as like we can say that like Brahmanas like Mandali was like formed in 1840 in like Bombay and abolished the caste system. And then like Christian like missionary in the like 19th century set up a school for the like tribal groups. तो उनके लिए भी ट्राइबल ग्रुप्स सेटअप किया गया ताकि जो हमारे उसमें सोसाइटी में ये भेदभाव की जो भावना है वो कम हो। एंड देन लाइक we can also say like expansion like old cities and like factories was there, so poor people and low class people started shifting towards the cities for work. Okay, so like these beliefs like named John Allen carried many Indian laborers to like Mortis, where they like did a variety of forms hard labor. Most of these laborers were from the low caste. तो ये ले जा रहा है कि वो ज्यादातर लेबर वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे जो सबसे ज्यादा सोसाइटी में कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें खत्म करने का, नाश करने का काम कर रहा है। सो लाइक
जब तक हम like we can not remove these type of like problems in our society, so तब तक जो है हमारे समाज की जो एक जो कह सकते हैं कि एक उचित विकास है, या फिर कह सकते हैं कि जो एक सकारात्मक विकास है वो नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीजों का हमें हटाना जरूरी है। तो दिस थिंग क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। सो नाउ we have to move next. So like changing of like the like leaves of the untouchable कि कैसे हुआ था, and like the we can say that demands of labor was like created, trains had to be dug, and like road led building constructed, and like cities cleaned, and the right required like police, and then like digged carries like big players and like sewage cleaners, sweepers. Okay, like some also went to work in like you can say that plantation and in Assam, like communities, and like Trinidad and like Indonesia, work in the like new location was often very hard. And but the poor, the people from low caste, so like so this as an opportunity to get away from the caste systems, as well as like who could you produce foods? हम कैसे बात करते like किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो बता रहा है। लाइक दलित लीडर बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड टीचिंग इन द लाइक आर्मी अंडर महर रेजिमेंट, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, उनको सोसाइटी में जो आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ओके स्टूडेंट, सो लाइक दिस चेंजिंग leaves of the like untouchable, and then like all these things. So this thing clear now? Very good. So now like how did these social changes and reformers like benefited the untouchable and the Dalit? So ये कैसे how did these social changes the and reforms benefited the untouchable and Dalit? तो ये सब जो चेंजेस हुए हमारी सोसाइटी, ये कैसे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज या फिर कह सकते हो बेनिफिट के लिए काम किया। लाइक वी कैन से दैट लाइक दे गेट अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, गुड वर्क, एंड दे लाइक गेट गुड मनी, एंड दे गेट राइट टू लाइक engage each other to each other, and उनको ये भी अधिकार मिला कि they get good education and they get good like job. So like all these अगर हम जब ये चीज हुआ, जो बदलाव हुआ, जो चेंजेस हुए, तो इससे जो बेनिफिट है जो हम कह सकते हैं जो दलित है, लाइक अगर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि स्कीम्स दे गेट लाइक गुड स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो उन्हें प्राप्त हुआ जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइक पुअर पीपल एंड लाइक टू अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइक दलित एंड अनटचेबल कास्ट। Okay student, so like all these benefits get of like of untouchable and Dalits. Okay student, so this thing clear now? So like this is homework for you, this is question for you, like test your understanding, like what prejudice did the like untouchable like Sudras and to face? Like we can say that like discrimination in school, or we can say that like work inequality, and then like provide with government jobs. So which one? So what do you think, like what produce like did the untouchable and Sudras has to face? Yes, very good student, both A and B, not C. Okay, A discrimination in school and work inequality, तो उनको ये चीज हमें फेस करना पड़ता था अनटचेबल होने के कारण, तो ये चीज हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो नाउ so in this today class we discuss about like female reformers, and as well as we can also like discuss that like male reformers, and then like schools open for like girls education, as well as like all these things. So like a name of the like reformer established school for primary education of girls, like we can say that Arya Samaj. Okay, and then like we can, how did the like reformers and movement in the society took place in the early 19th century? Like they we can say that they like provide the good knowledge, and then like we can say uh, that in 19th and 20th century witnessed like mass movement and protest by women all over the world for the rights, उनके rights के लिए, and the like we can say that कि जो वो है कि like the adult suffrage movement, the western
कि जो in Western for like voting rights and gave like tremendous and the like strength to the women fighting to like all over the world. Like, do you think of the reforms in the society improve the situation of the untouchable justified? Yes, like historical women, all the like we can say that because like they to safeguard and like advance veto rights to some actions and like government like policy makers and each of one take like adopt to suits they have like adopt social and economic reforms to improve veto ये भी चीज उन्होंने किया improve करने के लिए and then like and like discriminatory laws and like ये सब चीज system जो था and they like empowered like widow to support themselves and then their families. So all these like so taken by all the reforms. Okay, student. So this is all about from my side. So this is homework for you. Yes, student. So homework is like first question is you have to read like universal adult suffrage was a break point in the history of women. Find such more issues that the women had to face back in earlier times and write about the role of social reformers and government in improving them. And second question is like imagine you are like teacher in the school, set up of Ruqayya Hussain. There are like 20 girls in your charge, but they are forced to stay at home. How will you create social awareness and convince their parents to send their the girls to the school? Write a detailed account. Okay, student. So this is all about from my side. Thank you so much, student.